Come aboard and feast your eyes. Boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be!
Come on, lad, no time like the present. Come on, she won't bite. You're connected to her now. Half sail! Ha! Your killer flies again! Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Let fly full sail! Loosen to full sail! Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Full sail! We need every knot. Full sail! Fall into half sail! We need to ease off. Half sail! Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. We need more speed! Bend them all, full sail! Mind those other vessels! Hold your tack to keep your right of way! Rein her in to half sail! I want everything! Loosen to full sail! Rogue wind! Ease her off! Slow her down to half sail! Cottages! We're close! No sail, haul in everything! Drop anchor! We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again?
We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Fall into half sail! Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring her Go around sail! broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Said round shot, Captain. On my mark! And fire! Well done, boy. Reload! Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Let fly! Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Prepare to fire! And fire! He's going down! Never gets old! Not bad for a spud, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah. Getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Half sail! Half sail, men. Fire! Park 'em! Park! Ready to fire! Gunboats are above! Why is he shooting at us? Wait for it! Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain! Fire swivel! On my mark! Fire! Down! Down! Cover! Headwind, veer off.
मार Take cover! रास्तारी को मारेगा ये Get her in range! You've got to get make ready! Fire! Give me the mark! Brigade! Oh, BB Twattle's another one. Where in the bloody hell did she come from? All hands down! Take cover! अब साले Get out of this headwind, Captain! Fire front! Station to the state! Load 'em up! Wait for it! Ready when you are, sir. Fire! Ready out to fire! On my mark! Damage report, officer! Right, sir! Firing now. Ready out to fire! Fire front! Carry on, Sarah. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man will have my guts for garters. Give us what you got. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Lord Dudes. 3 weeks, and not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. Yo, looking sick, dude. The cape लगा ले बस cape क्या sorry hoodie लगा ले. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals.
And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Dope, dude. ये बड़ा हो गया ये. हाँ बड़ा हो गया ना ये. देखना शक्ल देख इसकी. देख हाँ बड़ा हो गया नहीं. हाँ बड़ा हो गया देख. Yes. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? Battery. I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? मेरे पापा assassin मेरे ancestor assassin कुछ भी कर रहा है क्या? मैं तो इंसान हूँ. Can you hear me? Testing. 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Just a heads up, there's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. That's a lovely view. Seriously, Sean? Fuck you. Fuck you. कितना डेप्थ में बनाया है सिटी. नया होगा मेरा ग्राफिक क्वालिटी लो है. ओके अच्छा डेप्थ में तो बनाया है सिटी को. सिटी के डेप्थ तो बने हो सिटी में. कर तक बनाया कब होगा यहाँ पे. मैं क्रैश हो जाएगा सिस्टम शायद से. ग्राफिक बड़ा जीता हूँ.
Jesus. बेस्ट On the लगता है bright भाई side, मेरे को ये वाला no गेम. security to worry about. स्टोरी सबसे बेस्ट है इसकी. And on the not so bright Game, side, the game, slightest like- misstep means you're effectively बेस्ट Assassin's Creed की dazed. स्टोरी लगती है गेम. Shut up, Sean. Corruption. पता है सामने पूछ रहा है इसको. ओपा रपो. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. It's a joke. Or was it? Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late, and you'll miss the building. Now! Open your chute, now! That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected. But I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look. I'm not supposed to kill you. But the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Son, I owe you an apology. I shouldn't have.
क्या चल रहा है ये? अच्छा HDR पे चल रहा है इसलिए इतनी ब्राइटनेस दिख रही है मेरे को। मैं सोचूं हाँ ये बट HDR में दिखता तो अच्छा है कुछ भी कहो। आउटसोर्स है क्या उधर? Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. It'd be interesting to see what things were like back then. Excellent. देखना है कि पावर सोर्स देखते हैं मिलेगा तो ट्राई करते हैं 5-10 मिनट तक क्या पावर सोर्स Thought we could be saved. We sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world, we lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared.
But it was time we did not have. So we moved on. Moved on. We moved on. Wonder what's inside. Only one way to find out. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer, and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves, and know what was to come. First we wanted to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead, began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want!
But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Connor! All these things I Spare must a determine. moment. Of course. Only by knowing my Have a enemy can look. I hope to stop them. What is it? The Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Shao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. मेरा घर भी तोड़ा साले कॉर्नर ये पॉइजन डार्ट्स पे आ गए ट्रिप माइन चल ड्यूड
मुस्तान ये क्या होमस्टेड है क्या? होमस्टेड मिशन है रिक्रूट पीपल को रिक्रूट करने के लिए ना। अरे मैप है हरामजादे। फ्रंटियर होमस्टेड मिशन करना है क्या? देखते हैं क्या देखते हैं क्या होमस्टेड मिशन है। तो तू बोलो क्या मिशन है? Connor, it has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good. साले तो तू टाइम पास करता है तू साले। मिशन पे चलो रे बाबा। ये नंबर में लड़े बोलते हैं ना। बहुत फॉरवर्ड है इधर तो। I'm the faithful day. That's a faithful day. Split the bucket now. Get down now! No business alone! Down! Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustrations, gentlemen. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? You. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Ah, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights.
When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If there comes in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks! We're coming in! Trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Could use some support! Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expecting somewhere else. You mock me with such impudence. पैसा दे रहा बाबा और निशांत कैसे है बाबा सब बढ़िया अच्छा सब बढ़िया चल रहा काम हो चल रहा काम बढ़िया सब बढ़िया तू बता मस्त इधर तो मस्त बढ़िया क्या अभी भी जोमेटो में ही है या कुछ चेंज वेंज किया Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers.
I'll wager the same क्या men who तेरा levy वर्क the फ्रॉम होम है या taxes परमानेंट are ऑफिस? selling the tea. A stage requires a मतलब ऐसा spectacle, हाइब्रिड and है I या may know परमानेंट the ऑफिस? play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return बढ़िया here. बढ़िया। मैं ऐसे टाइम पास के लिए स्ट्रीम कर लेता हूँ। मैंने कहा बोर मार रहा तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर स्टोरी मोड खेल रहे तो स्ट्रीम भी कर ही लेते हैं। क्या ही जा रहा है? इसी वाले मेरे बहुत टाइम बाद खेलने की इच्छा हुई है Assassin's Creed 3। मैंने कहा खेल लेते हैं। कोई ना बढ़िया है। हाइब्रिड तो फिर भी ठीक है। वर्क फ्रॉम होम तो भाई बहुत हो जाता है भाई। क्या कहते हैं उसको? वर्क फ्रॉम होम तो बोरिंग हो जाता है भाई। अकेला घर में बैठना बहुत। एटलीस्ट ऑफिस में 10 लोगों से बात तो कर सकते हैं कम से कम। ठीक है सही है। मिशन मैं सोचूं मैंने नहीं किया। सही है सही है। करना ही नहीं मिशन अभी मेरे को। ओके Hey, what are you doing? Come here. सॉरी बड़ी। अब क्या ही आ रहा करना। ये तो है बट ठीक है। हाँ वो तो है। चल है वैसे वो तेरा कोई बेटी नहीं है। भाई रीसेट हो जा भाई। हेलो हेलो हेलो। क्या होगा भाई? रिस्क करना पड़ेगा। हाई रिस्क करे भाई। देखा ही नहीं मैंने। रीसेट कर लेते हैं। याद करना पड़ेगा। Use the powder kegs to destroy the smuggled cargo. Limit firearm usage. पाउडर केक किधर पड़े? तुम लोगों को तो लुढ़काना पड़ेगा। अरे टै टै कर रहे हैं। इस पे लेवल 2 क्या? पाउडर केक बनाएंगे इधर पड़ेगा। तो मरे हैं क्या? Come back, you weakling cowards! Hold there! Just bullies! क्या था? लिमिट द फायर आर्म यूज। ठीक है आग लगा दे क्या? भागो। यूज पाउडर। एक तो हो कम से कम। हेलो पाउडर केग्स। अच्छा समझा। गोली मारनी। गोली मारनी। बूम फटेगा वो। इसको ऐसे करके ऐसे मैंने दो माथा हाथ में। तेरी तो काल
ऊपर पड़ी छोटे बड़े छोटे ए चीटर ये वाला डिस्ट्रॉय कब हुआ कितने बड़ा स्ट्रगल टू कितने हैं ये 3 है रे भाई रिसेट करनी पड़ेगी मेमोरी में हुक ये तो मेरा मिशन नहीं होगा साइड मिशन नहीं होगा Connor. Hello again. Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the अरे people भाई finally भाग taking क्या a भाई stand against injustice. तो पेपर उड़ जाएगा उधर से जल्दी आ भाई अकेला आदमी Says the man who owns a slave. Ooh, sorry. I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Hey! Is that all you have? Come on, you love the back! You can't take what's not yours! That's a clear shot! You can't take what's not yours! ओके नोटेड रूडो के ऊपर fuck dude यार सब क्यों आते हैं यार सब खत्म करो ना भाई नोटेड तो 200 पर जाएगी मेरी जल्दी इंटरेक्ट करो भाई अच्छा
को बुलाते हैं। चलो करने ना डिप्रेशन मिशन में। गलत जगह है क्या भाई? अरे भाई दोनों कैसे मिलते हैं? ये नहीं भाई, तेल ही नहीं करते बट I've got trouble here. Help! Let's have a word. You there? ooh, nice shot, dude. कैसे पड़ा है? रैगडॉल किसी बनी हुई नहीं। इसको इसकी गन से मारूंगा मैं। कहाँ गया है? नहीं तो वेपन देखो। बूम। He's off! Right. Where's the bastard gone to? I've got a clear shot! Get back here, you deaf turd! Get back here, you deaf turd! And hit back in moves. What's the matter with that, Luke?
Call upon the services of a qualified. रस्सी की आई थी जो मैंने कहा इतना क्या मिल रहा था Oh, I'm rich, dude. इसको कार्ड क्लिक होते हैं ओह Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Vont me le payer, ces scélérats de merde! Where are you going? To get back what's rightfully mine. From low profile assessment. Oh! Regardez! Some pathetic redcoats! What I will match your face to your jacket! Stefan! You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. Hey, redcoats! You're kidding! L'endroit croise mon chemin. Ils m'obligent à fuir mon pays. Et les voici qui veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Last I heard, there was raging another war right further inland. Now contracted by car. At this point, anything There is a way to fight injustice, but this is not it. Destroyed? You stupid mongrel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense! Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you.
and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Look at me gourds. Are they... Don't be shy. Come and see the lovely lady. Oh, bloody hell are you? Why? You have no right to rub people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough. Which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my teams. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. ये वाइन डोप शोप मारा करो। अच्छा है ना भी ना। और नरक कैसा है भाई? देखा नहीं यार मैंने, कब मैसेज किया तुमने? सॉरी बाबा, देखा नहीं मैंने। अभी देख रहा हो तो हेलो, कैसा है मेरी जान? सब बढ़िया? इंस्टाग्राम फोटो वोटो देखे मैंने, ये एकदम चेंज हीरो। What happens now? We wait for the चंगा signal. अरे बढ़िया है। What ये signal? इंस्टाग्राम फोटो वोटो देखा मैंने। ये लौंडा तेज हो रहा है। नाइस बॉय। Evening, gentlemen. चलो Shall we be off? किसी की तो बंदी है, मैं खुश हूँ भाई। I have मेरे spent भाई की today बंदी drawn में from खुश हूँ one भाई। bit of मेरे ना बन madness to सकी, another कम से with कम तेरी nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea.
Simple as that. Simple seems a bit बता भाई जॉब charitable. चल रही है बढ़िया एकदम मस्त Cheer तू up, बता कॉलेज Connor. कैसे चल रहा है For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty क्या मजे get चल to रहा है send a कॉलेज में message to England, and you rob William क्या Johnson कॉलेज of से his या financing. कहाँ से Your village will be saved. ओह तेरी I have an बंदी idea. कॉलेज से Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? बढ़िया यार देखते हैं फर्स्ट डे खत्म होने वाला है अरे लॉन्डे बढ़िया भाई और क्या मजे स्कूल से Damn it, more guards. तेज है भाई We तू need to turn the पूरा नहीं crowd's बता रहा anger है to तेज है our भाई। advantage. Say the यू word, में Connor, and I will मैं make it है so. अभी तो Nice, nice। बढ़िया बढ़िया और कैसा रहा कॉलेज फर्स्ट ईयर क्या मजे किए ये बनेगी शायद अरे तेज भाई नाउ नाइट आउट मारे दूसर गए नाइस मजे करो भाई मजे की जिंदगी है भाई अभी टाइम है भाई कॉलेज जितने मजे करने कर ले भाई फिर बता नहीं लाइफ का कौन सी डायरेक्शन में क्या मोड़ ले जाए ओ भाई टमाट पड़ गया भाई इसको तो आई नो अभी तो इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है करी IBM में 2 महीने की अच्छा तूने कंटेंट वेब डेव की अच्छा नाइस है सही है भाई इंटर्नशिप लगाओ बढ़िया है सही रहेगा एकदम और कौन गए माफ करो नरेश भाई माफ करो थोड़ा इधर तो होया था गलती से और कौन ही करेगा जो इंटर्नशिप भाई माफ करो इधर उधर हो यार और बाकी सब कैसा चल रहा है बढ़िया कब है सेकेंड ईयर कब चालू हो रहा है सेकेंड ईयर अभी छुट्टी होगी ना अभी कुछ मिलती होगी 1 महीने की छुट्टी मिलती होगी या नहीं है छुट्टी भाई सेकेंड ईयर अगस्त एंड में सही मजे करो कितना अभी तो जुलाई पड़ा है हाँ सही है भाई एक में है एक डेढ़ महीने छुट्टी है मस्त We need to keep those bastards at bay while the tea is being dumped. Let me help. I'm yours to command. क्या था डंप क्रिएट्स ऑफ टीन हुआ था कुछ परफॉर्म मस्केटर असैसिनेशन ओ भाई ये तो बाहर चला गया XT मेरे को लगा था पानी में फेंकूंगा मैं जय श्री राम मस्केट वाला बंदा कहाँ गया ओ बड़ी नाइस मैं आधी पोस्ट कितनी बेकार रिलीज हुई टोटल डिस्काउंट तूने देखी भी है क्या मैं तो देखने भी नहीं गया पर मुझे पता था टट्टी है तो ऐसी मूवी देखी नहीं जाती भाई ऐसी मूवी कचरा होती है कचरा ओ बूम जरा चल जरा ए हाँ बंदे का है ठीक तो गया ये पकड़ सकते हैं क्या इनको अच्छा लात मार सकते हैं इधर इधर सारे इधर मना पापा कह रहे थे देखन पापा कह रहे थे दिखाने को
मेरे को नहीं फेंकना था भाई। तो पानी में जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे साहब। मेरे को क्यों मारा भाई? मेरे को भी तोड़ा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? भाई पकड़ भाई। भाई मेरे को मत तोड़ो भाई, तुमको गिराना है, तुम मत कर साले। अच्छा ये है ना, अच्छा पानी वाला हो गया, लेट्स गो। चाय फेंको, चाय चाय फेंको, चाय फेंको। साले ज्यादा मिस हो रहा है। अरे मेरा काम चाय फेंकने का सबको। अरे छोड़ना भाई। ए भाई जाना भाई, मेरे को चाय फेंकनी है मेरे को भाई। अपना अकाउंट दे दे, 100 खेलूंगा स्किन से। देख मैं आज भी अपना अकाउंट किसको नहीं देता। स्किन तू खुद भी मांग ले, तू मेरे से वो मांग, पैसा मांग ले, मैं अकाउंट दूंगा। मैं बहुत प्यारा अकाउंट मेरे को अकाउंट से बहुत लगा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो बट आई लव माई अकाउंट। चाय उठा रहे भाई। भेज पैसा। चल बे, क्या हाथ दूंगा तो पूरा पीट लेगा क्या मेरे को साले? We've done it. और क्या है, तेज हो रहा है लौंडा। गेम में गिर रहा है, यहाँ भी गिरेगा। लम्हा गंदा गंदे जोक्स, गंदे जोक्स मारते हुए अनुराग भाई। कैसे पड़ गई तेरे से बंदी है, मतलब कितने गंदे जोक्स तो मारता है। भाई वो सांप लग रहा है भाई इसकी आंखों से भाई। वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। हाँ मैं वो तो कैसे बढ़ गई। और आईफोन लिया कि नहीं? नहीं रे, आईफोन इधर लैपटॉप नहीं लिया जा रहा है, इधर आईफोन की बात कर रहा है साले। इधर घर ही हूँ मैं इधर। आईफोन में मजे नहीं है भाई। लैपटॉप लेंगे तो मस्त बढ़िया ऐसा एकदम FPS वाला, FPS मस्त FPS आएगा, FPS से गेम खेलेंगे, फिर आप वैलोरेंट बूम बाम करेंगे। आईफोन भी लेना होगा, कभी लेंगे, पर यूँ क्या ही फर्क क्या ही पड़ जाएगा आईफोन से। मेरे दोस्तों ने तो काफी नोट लिया भाई, जैसे पैसा आया ऑफिस में भाई, ये 2-3 आईफोन है। मैंने कहा बूम बाम खर्चे हो रहे हो, जो देखो उसके बाद आईफोन है भाई। मैंने कहा बस सही है भाई। हाँ आईफोन नहीं होगा, नोकिया 3310 हो गया भाई। ऐसे लगता है मेरे को, लग रहा है आईफोन नहीं होगा, नोकिया 3310 हो गया भाई। जिसके पास देखो उसका आईफोन होता है, जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहा था ऑलमोस्ट। फ्रंटियर जाना है, आईफोन सब पे वो तो है वैसे कॉमन हो गया आईफोन बहुत।
कोई स्टेटस नहीं बचा। हाँ अब तो वही नॉर्मल है, अब यूटिलिटी हो गया आईफोन भी। बस आईफोन वही, आईफोन खरीदो तो वही है कि थोड़ा बढ़िया ट्रस्ट रहेगा कि चलो 2-3 साल तक, 4-5 साल तक तो कहीं नहीं गई आईफोन की, अगर कंटिन्यूसली चेंज नहीं करते हो आप तो। कंटिन्यूसली चेंज कर रहा तो अलग बात है, बाकी कंटिन्यूसली चेंज नहीं करो तो 2-3-4 साल तो मस्त चल जाएगा बिना उसके कोई बीटी के। और वैलोरेंट नहीं खेल रहा तू? देखा मैंने खेलता है आजकल तो वैलोरेंट बहुत, वो मेरे को लगा कि कॉलेज वॉलेज तो खेल है भाई, कॉलेज में तो मजे करोगे बकचोदी। हमारा तो, और भाई हमारे टाइम पे तो वैलोरेंट आया था भाई, मतलब बहुत बकचोदी की है भाई कॉलेज में भाई। और एक तो वो कोविड आ गया था तो हम तो भाई वैलोरेंट ही खेले भाई दिन भर भाई। उधर एक दूसरे दूसरे मॉनिटर पे, दूसरे दूसरे स्क्रीन पे क्लास लगा के या मोबाइल पे क्लास लगा के, वो माइक्रोसॉफ्ट वाली गूगल मीट पे, और मोबाइल पे लगाई क्लास, म्यूट मस्त सुन रहे और क्यों वैलोरेंट में ट्राई कर रहे। रात में दोस्त खेलते तो खेल लेता। बढ़िया बढ़िया, हमने तो बहुत खेला है भाई वैलोरेंट, तो बहुत खेला है भाई, कुत्ता टाइप खेला है भाई वैलोरेंट। It is done. Johnson मैं is 11वीं dead? में कराई। No. He retreated when we destroyed the T. रूम पर क्लास लगाई। Only to hatch some new PUBG scheme, on, I'm हाँ sure. PUBG भी बहुत खेला ना मैं। We should PUBG have नहीं खेलता, killed him. मोबाइल अच्छा नहीं था कभी भी। There was no need. PUBG इतना खेला नहीं मैंने। PUBG तो खेला था फर्स्ट टाइम आया था 2018 में, तब बहुत घिसा PUBG भाई। 2018 में आया था PUBG, मेरे 12th में 11th में आया था, पता नहीं याद नहीं कब आया था आपको। Has something happened? बोल रही William थी टीचर Johnson has अटेंड returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the T. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please. तो मजे तो पता है। You have to stop. Of course. तो बहुत की। Can you tell me where they're meeting? और भाई घर पर सब कैसे? अरे बढ़िया एकदम। अब मम्मी आई थी, मस्त घर खाना खाया मैंने मस्त 1 महीना, इजी लाइफ। अभी आज ही गई है मम्मी, बैक टू वापस टिफिन वाला खाना। अबे तेरे बस सब बढ़िया। तू बता सब घर पे सब कैसे? भाई मैं तो रोज घर खाना खा रहा, साले गाली खाएगा मेरे मुँह से गाली। तो देखते हैं, तू भी यही है मैं भी यही हूँ, तू भी जॉब लगेगी तेरे भी 4th ईयर के बाद, देखते हैं तब देखते हैं, फिर बात करेंगे, फिर बोलेंगे। मैं स्ट्रीम तो तब भी कर ही रहूँगा, मैं छोड़ूंगा तूने बकचोदी वाली स्ट्रीम। जाना है फ्रंटियर जाना है ना क्या बेटी इधर? अच्छा फ्रंटियर में डीप जाना है ना, याद है। फास्ट आउट कर सकते हैं। शादी कब कर रहा है? शादी की उम्र नहीं भाई, अभी मैं बैचलर हूँ भाई। मैं अभी आई एम हॉट एंड हैपनिंग, तो अभी शादी नहीं करने का, ठीक है? मैं बालक हूँ भाई, बालक। 23 की उम्र में कौन शादी करता है भाई? हाँ भाई बैचलर इन टेक्नोलॉजी। अरे हाँ गंदे जोक्स मारने साले, गंदे जोक्स। बैचलर इन टेक्नोलॉजी। गंदा प्लेयर। कहाँ जाना है भाई? बैचलर इन टेक्नोलॉजी। जोक तो सस्ता है बट ठीक अच्छा लगा मुझे। बैचलर इन टेक्नोलॉजी नॉट ड्यूच। 1:30 बजी भाई, तो आज जमा है भाई, बहुत खेलेंगे भाई। 2 बजे तक मैं इधर ही हूँ, बहुत खेल लेंगे ना। मैं 2 बजे तक खेल सकता हूँ। मंडे कल ऑफिस जाना है, मंडे है। मैं लोग खेलते हैं भाई कितनी। हाँ भाई खेलते हैं। मैं तो ये लैग वैग करने लग गया तो मैं स्ट्रीम देखता हूँ, कभी टाइम पास होता है। वैसे दोस्त लोग नहीं आते तो खेलता नहीं हूँ मैं, वो सब PUBG खेलते हैं या अपने अपने मस्त है। तो मैंने कहा वाह चलो कोई ना, मैं ऐसे टाइम पास करने के स्टोरी मोड गेम खेल लेता हूँ। और हाँ आप तो मजदूर आदमी हो, मैं तो मजदूर हूँ भाई। तुम खुले सांड हो, मैं तो बंधा हुआ हूँ। मेरे को तो 9 से 5 9 से 6 नौकरी करके आना है वापस।
तुम जाओ रबड़ो, छुट्टियां भी है तो और अच्छा मौका है, घूमो मजे करो, बंदी को घुमाओ। तो सोचा लैपटॉप ले ले, बहुत अच्छा आ रहा है अभी तो। कितने का बजट, कितने का सोच रहा है बजट? एक ले तो अच्छा खासा बजट स्पेंड कर, क्योंकि कराएगा तो आराम से 3-4 साल आराम से। तो अभी क्या है कि अभी अच्छा थोड़ा बजट ला के स्पेंड करेगा एक बार में, तो फिर 4-5 साल तक तो 50-60 के अभी थोड़ा रफ है। 50-60 के में तेरे को i5 12 जेन मिल जाएगा, i5 11 जेन आई थिंक सो। वो ठीक है, बट i5 सजेस्ट नहीं करूँगा, इससे बढ़िया थोड़ा 80 तक ले जाएगा तो i7 तो मिल जाएगा तेरे को अच्छा खासा 30-40 30-50 में। और थोड़ा वेट कर ले तो दिवाली सेल में थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। तो अराउंड इसको 70-80 के तक करेगा उसको बजट को, तो तेरे को अच्छा लैपटॉप, मतलब वो लैपटॉप इन द सेंस कि वो तेरे को अच्छा खासा मिल जाएगा आउटपुट। मतलब जैसे मैंने लिया था ये 66 में, ये 1050 Ti चल रहा है, देख मस्त वाला एकदम अच्छा खासा, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया एकदम। काफ़ी अच्छा चला है भाई, काफ़ी इसमें मतलब टिका रहा है मेरे को। साले भालू इधर साले पड़ी चमाट पड़ी इसमें। इधर कितना दूर है बच 1050 Ti और 1650 देखो तो 3050 मिल जाएगा अभी 70 में, तो 3050 Ti मिलेगा 70 में सीधा, अगर थोड़ा खर्च करेगा तो। खर्च इन द सेंस की दिवाली सेल का मिला के और वो सब करेगा तो 3050 मिल जाएगा। 60-50 यार बेटर है, नया जनरेशन है ना, बेटर। नहीं मिल रही फिर मतलब तेरे को 3050 144 i7 11 जेन ऐसा कुछ करके अराउंड तेरे को 80 तक पड़ेगा, सेल वेल करके या कुछ झाल झोल करके, तो तेरे को मिल जाएगा उतने में। तो लैपटॉप्स तो बहुत मिल जाएंगे, लैपटॉप से तू सर्च कर, लैपटॉप ऑप्शन तो बहुत है, बट वो ये बजट का देख दिखा के और वो सब, अरे यार फ्रॉड करना पड़ेगा क्या मेरे को। उधर जाना पड़ेगा भाई मेरे को, तो बहुत दूर है यार ये तो। पापू को मनाना पड़ेगा 2 साल अभी, ठीक है भाई, सोच क्या करेंगे। अभी तो लिया है ये, कौन सा है अभी कौन सा है तेरे पास? अच्छा हाँ, तेरे पास तो गेमिंग लैपटॉप था ना पहले से, कौन सा था तेरे पास? कुछ क्या जाना है। अच्छा अरे यार i3 11 जेन अच्छा नॉर्मल है। i3 का तेरे को प्रॉब्लम है, देखो एक्सचेंज रेट भी नहीं मिलेगा, i3 का बहुत बीटी है, एक्सचेंज रेट भी नहीं उसका इतना, तो तेरे को एक्सचेंज भी नहीं करता पुराना लैपटॉप। i3 तो बहुत पुराना हो गया यार, i3 11 जेन भी मतलब 11 जेन है फिर भी, बट कंपेरेटिवली बहुत पुराना है। i3 आपको यूज़ करता नहीं है अभी, एक्सचेंज करना ही नहीं अच्छा।
और आज भी वैलो में फर्स्ट पे जाते हैं तो सही है रे। अरे वैलो इतना डिमांडिंग नहीं है रे, डिमांडिंग नहीं वैलो इतना, वैलो का इतना ज़्यादा डिमांडिंग का इशू नहीं है। बस वही है कि थोड़ा बहुत अगर हीटिंग अच्छा नहीं हो तो फिर बीटी होता है, थोड़ा सा चल जाता है वैलो का, इतना कोई इशू नहीं है। फायर क्राई खेला है, आ रहे थे बस। तो बस जीपीयू नहीं है, तेरे पास जीपीयू कौन सा था उसमें? जीपीयू कौन सा था उसमें? जीपीयू नहीं है, अच्छा। तो बिना जीपीयू के फायर क्राई गेम नहीं चलते भाई। अरे यार बिना जीपीयू के तो सिर्फ एफपीएस गेम है, एफपीएस गेम वेल इंटीग्रेटेड इंटेल वाला है, वो कुछ काम का बेकार है। देखो आ जाएगा अच्छा खासा। सही है, देख ले, थोड़ा बहुत खर्चा कर सके तो बजट वाइज थोड़ा करेगा तो बेटर रहेगा। फिर तेरे को 4 साल तक एटलीस्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप अपग्रेड भी नहीं होता ना, प्रॉब्लम हुआ है। मैंने पहले पिछली बार लास्ट टाइम जब किया था मैंने वहाँ से ट्राई करके आया था, दूर से सिंपल सा रास्ता था भाई ये, बिना उनको मारे था ट्राई करो, उधर फिर डिटेक्ट हो जाओ, वापस स्टार्ट करो, क्या बहुत चल रहा है। तो फ्लैट चलना पड़ेगा ये तो एकदम एच टू एच चलना पड़ेगा इसमें। खड़े हैं क्या? नाइस। वो ऐसा लेते हैं लगा रहे दूर एच टू एच खेलते हैं भाई, एच टू एच खेलते हैं। वो तेरी माँ की, वो तेरी तो वो तो आसान है रे ये वाला। पहले वो ट्राइड किया था, पहले क्यों ट्राइड किया पता नहीं मुझे था। एच टू एच खेलने में हो जाता है काम सारा, गेट का कुछ चक्कर नहीं। हाँ ये प्रॉब्लम तो है। नाइस है, तो आसान हो गया, एच टू एच वाला आसान हो गया। हाँ वो तो है, मैं भी सोच रहा हूँ नया लेने का। अभी एक दिमाग को बट उसका ऑफर नहीं आ रहा। 1 लाख तक का लूंगा We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. आप तो अमीर आदमी हो भाई, महंगे लैपटॉप लोगे हो भाई। कहाँ अमीर? I offered you an olive branch. अमीर होता तो 2 लाख का लैपटॉप लेता ना भाई, 1 लाख क्यों लूंगा मैं? समझ रहा है तू? समझ रहा है? दिमाग साले। अमीर होता 2 लाख का लैपटॉप लेता ना, आईफोन होता बस साले। जॉनसन हमें जाना। Oh no.
What have you done? पैसा Ensured an नहीं है end to your भाई schemes. देखना गरीब You sought लैपटॉप to पे claim खेलो these भाई lands FPS for का the आ रहा है देखो भाई Templars. मेरे को Aye, गरीब लैपटॉप that we पे might खेल रहा हूँ protect them. गरीब हूँ मैं Do you think that I'm good very King poor, George dude. lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that ये need क्या soil, बहुत सही के when क्या there's no ये more कौन सी enemy गली to भाई मेरे fight, को बहुत सही we'll see how kind the people are then. The colonists have no बहुत quarrel with the सही के Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. बहुत सही के In time, they'll turn. लिखते हैं भाई पूरा मैं भाई could've तेरे को तो stopped मैं वो भी नहीं कर सकता भाई could've मॉडरेटर saved तू Wall. You speak of salvation, but you रैंडम are मतलब killing तो नहीं तेरे को बैन करूंगा मैं बहुत Because they सही would not listen. And so, it seems, Oh God. neither will you. तूने आने ले अरे भाई मेरी माँ की नजर है इस पुराने लैपटॉप पे माँ को दूंगा मैं Ayamos ne yahte hagum sare am dahyayum ne skanas izagum haje. तूने आने ले मैं तो ले रहा हूँ भाई I'll make short work of you. अच्छा परफॉर्मेंस ऑन है उसकी पानी किधर है पानी किधर है I would like to perform a swan dive escape please भाई पानी नहीं है इधर भाई पानी किधर है अच्छा यार है ना हाँ ये रहा ये मेरा swan dive escape भाई कूद रहा एक्सचेंज करता तो गाली देता मैं भाई ये भाई क्या ये क्या जुटेगा भाई अरे यार भाई वो लेजी कूदने के लिए था कूदा क्यों नहीं है मुझे ये समझ में नहीं आया ये देखना कूदने के लिए लेजी है कूद भाई हाँ अब आया ना काला हराम इधर कौन कूदता है भाई ये भाई अल्ट पकड़ दे अभी कूदा ना साले गेम गांडू तो मैं करूँ साले कूदा ना हो गया भाई फुल सिंक्रोनाइजेशन प्रो गेमर भाई फुल सिंक्रोनाइजेशन प्रो गेमर William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. दिख रहा है ये But in इससे मारूंगा this साले threat, तेरे को दिख रहा है ये राइट I दिख रहा है have मेरे हाथ revealed में another. इससे On his भोग body दूंगा was a letter साले addressed to बकचोदी John करेगा मैं Pitcairn, तेरे containing orders to root out and destroy Patriot weapons and ये supplies. दिख रहा है ये चक्कर के अंदर Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity and instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. जब मैं बड़ा सीमा बन जाऊंगा तो देखो मीटअप बोलूंगा आ जाना जो ठीक है इज्जत रखना होगी मेरी 2 दिन में मीटअप करेंगे ठीक है जब मैं बड़ा सीमा बन जाऊंगा तो ठीक है Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? बड़ा सीमा और मैं IITian जाने का 7 चांसेस है साले मेरे पास तो अभी भी चांस है तेरे पास क्या है वो बता मेरे पास तो अभी भी चांस है जो लेफ्ट वाली चीज की प्रोबेबिलिटी अभी भी हो सकती है तेरा राइट वाली कभी नहीं हो सकती है समझ रहा है
Guess you made an impression on the sons of बड़ा liberty. देख के जवाब दिया They कर mistake me for one of their own. कोई चांस नहीं Please tell साले Mr. Revere he has डिमोटिवेट my करता है तू sympathies, तो गयो but I cannot help at तू present. तो गयो You might wish to डिमोटिवेट तू तो reconsider. गयो John Pitcairn is mentioned by name. छोड़ यार मैं Where तो am I टाइम आउट देना था बोले मैंने कहा क्या Mr. फ्रस्ट्रेशन Revere's निकालूंगा house चैट में in तेरे को Boston. If you'd like, I can... है ना अब चलते हैं ओए 2 बज गए मजदूरी का टाइम आ चुका है मेरा नींद भी आ चुकी है आंखों में नींद 2 बजे का मजदूरी का टाइम मजदूरी कॉल टाइम आ चुका है अनुराग भाई टाइम दैट आई कॉल इट क्विट्स बेंचोद मजदूरी करने जाओ बकचोदी कर रहा है साले देख रहा है एक गोप दूंगा अंदर दिख रहा है ये दोनों अंदर दिख रहा है ये नारुतो रन करके गोप दूंगा दिख रहा है ये देखिए ऐसे करके ये देख ऐसे नारुतो रन करके गोप दूंगा अरे नारुतो रन नहीं कर रहा देख इसको देखिए देख भाई कैसे भाग रहा है इसको देख चिक 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 करके इसको देख रहा है यूं ये छक करके यूं देख रहा है ये छक करके अंदर सीधा बकचोदी नहीं करने का ठीक है कैसे भाग रहा है इसको देख भाई दुन 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 वो है ना कमलेश क्या नाम है कमलेश दुन 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 कमलेश बदल नहीं ला तो भाई दुन 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 करके चल चलते हैं भाई हो गया मेरा भाई आज का बाय 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 बाय